ठीक है, आओ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, demand pull inflation is associated with aggregate demand rising faster than aggregate supply, often in periods of strong economic growth and low unemployment. Cost push inflation typically arises when production cost increases. ठीक है, तो देखो what these are the two causes of inflation. Inflation माने कौन? हाँ, it is persistent rise in the price of goods and services. Money नहीं, it is rise in the price of goods and services, महंगाई, that is inflation. ठीक है, then what to be noted, pen change कर देता हूँ. The cause, there are two broad causes of inflation. One is known as demand pull inflation. ठीक है, जो cause हमें देखिए causes of inflation रे, causes of inflation रे, there are two broad causes. One is demand pull inflation and second is known as cost push inflation. These are two broad causes of inflation. आउ गोटे cause अच्छी बट क्वेश्चन पचारि, that is structural inflation. Structural inflation. तो demand pull inflation केबे होचे? Because you have to remember 2-3 factors, 4 factors basically you need to remember. केबे demand pull inflation हेबो? First, when there is rise in income of individual. जेबे लोक मानकर income बढ़िबो सेही टाइम रे हेबो. When there is demand supply mismatch, ठीक अछि, demand supply mismatch रे सेठी demand pull inflation हेबो. That means what? When जब जदी demand बहुत अछि ता अनुसार जदी supply होनी तो से प्रोडक्ट रो रेट ता बढ़िबो कि घटिबो? से प्रोडक्ट रेट ता बढ़िबो. तो when there is demand supply mismatch, it will lead to demand pull inflation. When the income, तुम जदी income बढ़ी गला, you will demand more from the market, it will lead to कोन? Demand pull inflation. Rise in money supply, जब इकोनॉमी रे बहुत पैसा सर्कुलेट हेबो सेही टाइम रे भी it will create inflation. And the last important is lowering of tax rate. जदी सरकार तुमरो टैक्स रेट ता घटई देछि तो you will have more disposable income, है ना? जैसे if you are earning 50,000 and the tax rate is 10%, तुमरो disposable income कितने? 45k. Disposable income is income after deduction of all tax. So you have 45,000 to spend. If government reduces tax rate to 5%, तो एबे तुमरो कितने in hand रहिबो? 47,500. तो बेसी पैसा आसिला तो you will demand more. Market रे बहुत जिंस नेबो. When you demand more, it will lead to what? It will lead to demand pull inflation. Whenever there is demand of any product for which the supply is not matching, demand बहुत होची से अनुसार supply होनी, obviously तारो price बढ़िबो ही बढ़िबो. And these three factors को मन रखिया पड़िबो. Then what is cost push inflation? Cost push inflation केबे हेबो? When cost of factor of production बढ़िबो. जबे factor of production रो cost बढ़िबो सही टाइम रे कौन हेबो? Cost push inflation. Factor of production कितना है इकोनॉमी में? There are 4 factor of production. What are those? Land, क्या क्या है? Land, labor, capital and enterprise. ठीक है? And obviously the cost of raw material भी we can add. तो there are basically 4 cost of production. जब cost of production रो जदि land रो कौन? Land rent, labor रो wage, capital will you have to pay interest and enterprise is profit. तो whenever the cost of production जदि बढ़िबो, जब land और rent बढ़ी गला, suppose तमरो land और rent 20,000 अछि, ठीक अछि, लेबर को तुम 5,000 दउछ, तो तुम गोटे प्रोडक्ट रो रेट रखिलो x रुपी. When the land rent increases, labor रो जदि wage बढ़ी जिवो तो तुम प्राइस बढ़ैबो ना जो प्रोडक्ट तुम करूछ प्रोड्यूस. So if any of the cost of factor of production rises for which the cost of good or services, if it is rises, ताको हमें कौन कहबा? Cost push inflation. Clear? Demand pull माने demand supply mismatch, rise in income. Cost push माने मने रखिबो, it is when the cost of factor of production जदि बढ़ियो, factor of production जदि cost बढ़ियो माने कि land or rent, labor रो wage, capital रो interest
profit jodi eita bodibo then the price will rise, that will lead to cost push inflation. And structural inflation kebe hebo when there is deficiency in infrastructure. जब इंफ्रास्ट्रक्चर रे नाही जदि इकोनॉमी रे इंफ्रास्ट्रक्चर नाही सेही टाइम रे कोन हबो सेही टाइम रे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हबो. इंफ्रास्ट्रक्चर माने गोटे सिटी गोटे गाँ रे कनेक्टिविटी ही नाही, रोड नाही, तो जदि जिंस गोटे ए रु बी जीव कॉस्ट तार बढ़िबो ना. रोड ही नहीं, जदि कनेक्ट कर देबो हमें रोड की ब्रिज बना देंगे दोनों के बीच में, तो कॉस्ट ऑफ जो तार गुड्स रो ट्रांसपोर्टेशन घटी जीव इनफैक्ट. तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन केबे हबो व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर? फोटो ने बेगे एंड देन नोट्स नहीं अच्छा से ठीक है. तो आर आंसर कौन है वो देखो. क्वेश्चन कमिंग बैक टू क्वेश्चन कौन एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखियो. ठीक अछि सेटा डिस्कस करबा क्लास पर. ठीक अछि काहे एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखे सेला व्हेन दे. अच्छा आपको पाखा नोट्स नथिबो ना बोले आपन जो ऑनलाइन जो हमरो नोट्स डॉक टिके चेक करंतु बहुत बढ़िया भाव रे इन्फ्लेशन टॉपिक रे नोट्स अछि 8 पेज रे मु पूरा कंप्लीट करि छी. मु एबे शेयर कर देबे आपन क्लास पर. तो देखो तो व्हाट इज द as demand pull inflation is associated with aggregate demand rising faster than aggregate supply. ठीक है वो कि नहीं? Yes, when the demand rises supply तो कौन है वो? It is the first statement is very correct. ठीक है. Second, cost push inflation typically arises when the production cost increases. Yes, जब cost of production बढ़ियो जेमति wage हैला raw material हैला तारो जदी बढ़ियो to lead to cost price. अच्छा बट एटी कौन अच्छी टिके एडिशन कर दी एंड शिफ्टिंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड एंड रिड्यूसिंग प्राइस. द फर्स्ट पार्ट इट इज करेक्ट. फर्स्ट पार्ट करेक्ट, दैट इज इट मींस इट इज द लेवल ऑफ ओपीएससी. सेकंड इज द लेवल ऑफ यूपीएससी. ठीक है. द सप्लाई कर्व राइटवर्ड एंड रिड्यूसिंग प्राइसेस. ठीक अच्छे. तो दिस इज रॉन्ग. कहीं देखो A will be the answer. जदि कर्व हमें देखिबा when the curve इटा सपोज इटा कर्व डिमांड सप्लाई रो कर्व लॉ ऑफ सप्लाई रो कर्व जो पढ़िबा हमें लॉ ऑफ सप्लाई जदि कर्व ना राइटवर्ड शिफ्ट हेबो कर्व विल बी इफ राइटवर्ड शिफ्ट लिखो when the curve is rightward shift. हां एडिशन लिखो क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है नोट लिखि दियो. ठीक अछि. तो अगर क्वेश्चन अछि आज में नहीं ना गोटे क्वेश्चन मु दे देबे गाड़ी. ठीक अछि पीडीएफ अछि. हां लिखो when the supply curve shift rightward, when the supply curve shifts rightward it indicates lower input cost. It indicates lower input cost and more supply. It indicates lower input cost and more supply. And when the curve shifts leftward, जब कर्व जोटा लॉस सप्लाई रो कर्व जदि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हेबो राइटवर्ड रे कोन होची लोअर इनपुट कॉस्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मोर सप्लाई. But when the curve is shift to leftward, it means higher cost of production, which will lead to low supply. एटा मनो रखिबो. When it is shifted to rightward, राइट होने से लोअर इनपुट कॉस्ट की लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटी जीवो तो सप्लाई टा बढ़ी जीवो. When the curve shift leftward, it means higher cost of production, and जब higher cost of production रहइबो तो supply chain रे in fact बढ़िबो. So the first part of this question was correct, but the second part it was wrong. So answer is A, one only. ठीक है. जा पाए क्वेश्चन नहीं नो डाउट ओपन करबा तुमको बनै देछि पीपीटी सुनो बोल के ना सब. And this you have to add
लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड कर्व टिके पड़िबो दिस इज यूपीएससी ओपीएससी रे लेवल जीवन लो सप्लाई हायर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लो सप्लाई जब कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन जदी बढ़ी जीवो तो सेठी से सप्लाई कमी जीवो ठीक अछि देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statement headline inflation in India is targeted under flexible inflation targeting framework is measured by CPI CPIC including food and fuel core inflation in India is usually defined as WPI inflation excluding food fuel prices देखो तो आपको स्टडी करबाकू you need to know about types of inflation ठीक है again it is of two type one is headline inflation and one is core inflation ठीक है these are two type of inflation headline and core मन अछि तो headline inflation रे आको में retail inflation भी कहइतलु retail तो this inflation it measures price change of all goods and services including food and fuel yes ए headline inflation रे ए कौन करे सबु जेते भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी रे अछि इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल तारो प्राइस चेंज मेजर करिवो जोटा न्यूज़पेपर रे इन्फ्लेशन लिखाई थिबो बाय डिफॉल्ट कौन रहबो इट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन बाय डिफॉल्ट इट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन ताकू लिखिबा पड़ियो कोर इन्फ्लेशन कोन इट मेजर्स प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट विल एक्सक्लूड व्हाट it will exclude food and fuel why core inflation we are excluding food and fuel because the rate of food and fuel fluctuates day to day hame seta nahi ki chali paribunu that is why in core inflation we exclude these two components food and fuel but in headline inflation we keep this food and fuel component ठीक है and the default inflation in the paper is headline and retail inflation then second you have to remember the point ki India re we our जो inflation targeting होची सेटा flexible inflation targeting होची we do not follow rigid inflation targeting what it means गोटे कमिटी होची हमरो monetary policy committee से डिसाइड से ताकू कोनो टास्क दिया आइछि कि they have to keep inflation at 4% plus minus 2% central government has given responsibility to monetary policy committee to keep inflation at what percent 4% plus minus 2% that means 2 to 6% भितर तारो टारगेट अछि आरबीआई pro target एटा so hence plus minus 2 तो we are flexible inflation target जदी rigid के बे थांता जब एमपीसी को हम डायरेक्ट कोइ थांता कि तुमको 4% मेंटेन करिबार अछि that is rigid inflation targeting but we are not following rigid we are flexible to ठीक है plus minus 2% हम नहीं कि चालू छु आओ ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रे जो सीपीआई जो टूल हम यूज करू छी इन्फ्लेशन सेटा होची सीपीआई सी ठीक अछि एज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीपीआई हम पढुतलु फर्स्ट गोटे होची सीपीआई रूरल सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइन दैट इज अर्बन प्लस रूरल ताको हम सीपीआई सी कहू तो दिस विल ऑब्वियसली गिव बेटर पिक्चर ऑफ कंप्लीट इंडिया तीनटा टाइप ऑफ सीपीआई अछि और भी अछि सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर बट मेनली दिस सीपीआईसी जो डेटा हमें सीपीआईसी टू मेजर करिबा सेही डेटा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर करूची फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन में एबे को फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट कि रॉन्ग हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया इज टारगेटेड अंडर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इज मेजर्ड बाय सीपीआईसी इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल दिस इज करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट सब देखो गोटे क्वेश्चन में तीनटा पॉइंट अछि मतलब बहुत मल्टीपल पॉइंट्स दे दिया है सेकंड देखो कोर इन्फ्लेशन इंडिया यूजुअली डिफाइंड एज डब्ल्यूपीआई नहीं डब्ल्यूपीआई दूसरा डब्ल्यूपीआई तो अलग है बिकॉज देखो वी नो डब्ल्यूपीआई जो अछि सीपीआई कोन हम तीनटा टूल अछि टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन जदी देखिबा टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन वी हैव थ्री टूल टू मेजर इन्फ्लेशन कौन कौन थिला मुझे याद है सीपीआई डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर सो वी हैव थ्री टूल टू मेजर इन्फ्लेशन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर
तो कोर इन्फ्लेशन रे इट इज नॉट डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, इट इज सीपीआई इन्फ्लेशन। आ गोटे मन पड़ो दिस पॉइंट कि सीपीआई रे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे वी मेजर प्राइस चेंज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन डब्ल्यूपीआई वी मेजर ओनली प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली। एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बारंबार पचारुछि। तीनटा टूल हम पाखर अछि। सीपीआई टूल रे हमें गुड्स रो भी प्राइस मेजर करूछु एंड सर्विसेज रे भी करूछु, बट डब्ल्यूपीआई रे वी ओनली मेजर प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली। एंड जीडीपी डिफ्लेटर रे अगेन, एंड जीडीपी डिफ्लेटर रे कोन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट हैला measure of goods and services, but that is produced in India. GDP deflator रे import goods की import services रो प्राइस आमे मेजर करूनु। दिस इज अगेन ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। जीडीपी डिफ्लेटर रे आमे जो इंपोर्ट करूछु, जदि तमर भाई बहन के कनाडा रे अछंती, से जदि तुम की कनाडा रे किछि तुम यूएसए रे किछि जदि गुड्स आनिछो, तो सेटा विल नॉट बी कैलकुलेटेड अंडर जीडीपी डिफ्लेटर, that will be calculated under CPI, consumer price index, because GDP माने कौन, whatever production happening within the country of India। तो जो हमें import जो करूँ goods and services तारो जो price change किए measure करिवो CPI, consumer price index, very important point। तो hence एटा जो आंसर रहिबो that is A। ठीक अछि। flexible inflation targeting करूछि, yes CPIC index नउछि, और ए सबू एमपीसी कमिटी रहउछि। एमपीसी कमिटी इट इज ए स्टैट्यूटरी कमिटी अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एमटी पचारुछि एमपीसी इज ए स्टैट्यूटरी कमिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एमपीसी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा ही नहीं, एटा गोटे लॉ रे लिखा हिछि। आरबीआई एक्ट 1934 2016 रे एटा बनिथिला अंडर उरिजित पटेल कमिटी रिकमेंडेशन। उरिजित पटेल एक्स आरबीआई गवर्नर से रिकमेंड करिथिले, ए कमिटीटा गठन हैला से टाइम रे। ठीक अछि। केते मेंबर अछंती कमिटी रे? 6 मेंबर्स तांती, जार चेयरमैन किए आरबीआई गवर्नर, तारो चेयरमैन रहिबो एमपीसी कमिटी रो। ठीक अछि। यू हैव टू लिंक थ्रू दिस। हां ए लीगल टारगेट वेरिएबल ना, जो टारगेट कितने थिला हमरो 4% प्लस माइनस 2%। चेकिंग फुट है, दैट इज लीगल टारगेट वेरिएबल, एंड दिस इज अंडर नॉट, ये सब ठीक था, बट इट इज नॉट डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, इट इज सीपीआई रे होना चाहिए। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन करेक्ट। बढ़े आगे पक्का। हाँ 1 ओनली होगा, बिकॉज दिस डब्ल्यूपीआई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। देन आते थर्ड क्वेश्चन, सीपीआई इज कंपाइल्ड, यस ये भी डेफिनेशन, सीपीआई इज कंपाइल्ड बाय एनएसओ and is considered to be better indicator of cost of living for household than WPI. WPI is compiled by RBI। तो whenever जब हम लोग स्टडी किए थे, जो पढ़े थे, जो डिफरेंस बिटवीन CPI एंड WPI, ठीक है, तो वी नो दैट CPI रो डेटा किए बाहर पड़तिला NSO। एवरी मंथ CPI इंडेक्स रो डेटा इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर को मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बट WPI किए बाहर पड़तिला Office of Economic Advisor under Ministry of Commerce and Industry। So this is correct, but this is, it is compiled by RBI, no, WPI is compiled by OEA, Office of Economic Advisor। ठीक है। And yes, CPI is the better tool, it is considered better indicator of cost of living for household। yes, क्योंकि CPI रे कौन अच्छी सर्विसेज भी अच्छी, गुड्स भी अच्छी, जो में 8 पे कमिशन आसुची सेटा कौन देखा जाउची, CPI ही देखौछंती। WPI देखि कि सैलरी बॉडी बनी तमरो, काहे आम कंज्यूमर ना अल्टीमेटली। तो CPI जदि बॉडी जोटा कमिशन जो डिसाइड होउची, जोटा 8 पे कमिशन आसीबो, इट इज बेस्ड ऑन दिस CPIC इंडेक्स। केते इन्फ्लेशन चालूची, जो CPIC जते इन्फ्लेशन करिवो ताकू ही रेफरेंस नै कि सैलरी बढ़ुची, ना कि WPI रे केते इन्फ्लेशन होची। बिकॉज़ CPI इज होलसम, सब गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस मेजर करिवो, इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस मेजर करिवो। तो CPI विल गिव करेक्ट पिक्चर, सब टू बेस्ट टूल टू प्रेडिक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर करबा को। तो दिस इज वेरी करेक्ट, ए इज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर विल बी ए। हाँ, if the phone number, if the nominal interest rate remains unchanged and the expected inflation rises, the x and real interest rate, this is UPSC type question। ठीक है, देखो कौन होची, what is real interest rate and nominal interest rate। देखो
रियल इंटरेस्ट रेट आमे याको कहि परिबा दिस इज एक्चुअली व्हाट यू आर पेइंग ठीक है एक्चुअली व्हाट यू आर पेइंग केते इंटरेस्ट एक्चुअली यू आर पेइंग नॉमिनल केबे होची ना नॉमिनल रे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रे इट टेक्स और इट एड्स इन्फ्लेशन माने इन्फ्लेशन हैला पोरे तुमको केते देबा पड़िबो ठीक अछि कोन होची व्हेन द इन्फ्लेशन जदि इकोनॉमी रे राइज होची इन्फ्लेशन जदि बढ़ुची तो नॉमिनल वैल्यू कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटा भी बढ़ी जीवो बट रियल जो वैल्यू अच्छी इंटरेस्ट रेट सेटा किछि इंपैक्ट हेबोनी नॉमिनल माने कोनो करंट इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन हो गया बहुत ज्यादा अब इंटरेस्ट रेट तुमको ज्यादा देना पड़ सकता है रियल माने इन्फ्लेशन सेठी नथिला एक्चुअल जोटा है तुमरो इंटरेस्ट रेट थिला सेटा तो कौन देखो इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रिमेन अनचेंज एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइजेस द रियल इंटरेस्ट फेस्ड बाय बोरोवर डिक्रीजेस तो गोटे मन रख पॉइंट जो थिला इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आमे पढी थी ठीक अछि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एटा पढी थी यास्मिन आमे तो जदि इन्फ्लेशन बढ़ू छी ना तो बोरोवर से माने फायदा रे रहिबे बोरोवर जे पैसा नौ छंती से माने बेनिफिट इन्फ्लेशन जदि बढ़िबो तो लेंडर माने से माने लॉस रे जिबे डिटेल मु पढी दे पर तो इफेक्ट इन्फ्लेशन बोरो जे करूची से फायदा रे रहिबे लेंडर जे से लेंडर कोन इन्फ्लेशन जदि बढ़िबो तो से माने लॉस रे जिबे तो व्हेन दिस नॉमिनल इंटरेस्ट जदि अनचेंज रहिबो द रियल इंटरेस्ट रेट फेस्ड बाय बोरोवर डिक्रीजेस यस yes तो क्वेश्चन नंबर 4 रो ना हां दिस इज विल करेक्ट द एक्स सेंटर रियल इंटरेस्ट रेट फेस्ड बाय द बोरो यस देखो कोन कहला जदी इन्फ्लेशन बढ़ू छे इन्फ्लेशन जदी एक्सपेक्टेड कि जदी बढ़ीबो तो इन्फ्लेशन बढ़िले बोरोवर भी कोन बेनिफिट रहइबो तो द रियल इंटरेस्ट रेट फेस्ड बाय बोरोवर डिक्रीज हेबो ना ताकू कम इंटरेस्ट देबा पड़िबो जदी इन्फ्लेशन बढ़ीबो बोरोवर्स माने फायदा रे रहइबो A persistent negative real interest rate tends to discourage borrowing. जदि तुम रियल इंटरेस्ट बहुत जदि घटू जाउछि तो it tends to encourage लोक माने बोरो करिवे बिकॉज़ रियल इंटरेस्ट ता कमी जाउछि तो लोक माने बोरो करिवे ना तो it will not discourage borrowing it will encourage borrowing सिंपल कथा ना जदि तुमरो इंटरेस्ट रेट जदि कमुछि तो लोक माने बोरो करिवे कि बोरो करिवे ना बिकॉज़ द इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट तक से कम अछि तो इट विल एनकरेज बोरोवर लोक ना बोरो करिवे इंटरेस्ट मार्केट रे कम अछि एंड जदि इन्फ्लेशन बढ़िबो तो सेठी भी रियल जो इंटरेस्ट रेट है सेटा कमी जिवो इट विल आल्सो बेनिफिट बोरोवर तो सिंपल देखो कोन व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट जोटा कमीबो इट विल व्हाट इट विल एनकरेज बोरोवर काहे कि सीधा सिंपल कथा ना इंटरेस्ट जदि घटिला सब बोरो करिवे and one more thing you have to remember whenever the inflation जदि बढ़ुछि ता माने जो रियल इंटरेस्ट रेट होछि सेटा कमीबो and again it will help borrower ठीक अछि इन्फ्लेशन कहिथिली ना जेबे से 2025 रे जदि के बोरोवर 5 लाख रुपी नेला फॉर 5 इयर्स ना 2030 जाय सेही टाइम जदि इन्फ्लेशन 3% थिला ताकू ईएमआई केते देबा पड़िबो फॉर एग्जांपल 10000 ताकू पूरा मंथ ईएमआई 5 वर्ष जाय से फिक्स 10000 करके देबो नेक्स्ट ईयर कोन हे गला 2026 रे इन्फ्लेशन रेट ता बढ़ी गला 5% 10% हे गला एबे ताकू केते पैसा देबा पड़िबो ईएमआई ता कितना देना पड़ेगा 2025 जदि के परसेंट नहीं छी 5 वर्ष पय नहीं छी से 5 लाख 10 ईयर से एवरी मंथ तार ईएमआई केते होची 10k तो उसको 5 साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे मतलब नहीं है देखो बट यहाँ पे जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 10% अगेन द बोरोवर हैज टू पे 10,000 ओनली फायदा रे रहिले तो जदि से 2026 लोन नहीं थांता ईएमआई 10,000 बनता नहीं बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया दैट इज व्हाई व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस द बोरोवर विल बी बेनिफिटेड एठी के लेंडर को नुकसान होला देखो एठी हे जीवो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ए केस पाई इन्फ्लेशन बढ़ी गला ऐड हे गला दिस इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड ताकू पे एटा कोन थिला दिस इज रियल इंटरेस्ट रेट जो अमाउंट रे से पैसा नहीं थिला दैट इज रियल इंटरेस्ट रेट बुझिलो जदी इन्फ्लेशन ताठू ऐड हे जीवो तो किछि नहीं ताकू रियल इंटरेस्ट रेट तर केते अछि 10000 ही थिला इन्फ्लेशन बढ़ी गला तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तारो बढ़ी जीवो खाली देखाइबा पई
10%, बट ताकू पे करिवो अछि रियल इंटरेस्ट रेट एंड ए नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट जदी रहइबो तो ऑब्वियसली ताकू आउ कम पे करिया पड़ियो बोरर माने विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ठीक है तो दिस विल एनकरेज बोरिंग दिस इज हाई लेवल क्वेश्चन ठीक है नथिंग लाइक दैट एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन थिला फिनिश करके देखिबा स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन कपल्ड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज करेक्ट है ना स्टैगफ्लेशन माने कौन स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटा पढ़ाई थिला इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन coupled with high unemployment इन्फ्लेशन सहित बेरोजगारी बेसी थिबो एंड एटा जो स्टैगफ्लेशन रे कोन गोटे प्रॉब्लम एसोसिएटेड स्टैग्नेंट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ जदि इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन बेसी होची अनएम्प्लॉयमेंट बेसी होची ऑब्वियसली ग्रोथ हेबोनी ग्रोथ रही छिबो स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ stagnant economic growth. So this is correct. Stagflation refers to situation of high inflation coexisting with high employment and low or negative growth. Yes, which contracts simple Phillips curve. हाँ, ये ठीक है. Second point देखिए. Now Phillips curve कौन थिला देखो. Phillips curve हमें पढ़ी थिलो. तार उल्टा थिला ना. 80 Phillips curve रा unemployment नहीं थिला. This is very important Phillips curve. ठीक ଅଛି. X axis रे unemployment, Y axis रे inflation. यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इधर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है फिलिप्स कर्व वाज लाइक दिस कौन रिप्रेजेंट करूछे कि जदी इन्फ्लेशन देखो घटुछे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुछे कि कमुछे इन्फ्लेशन अगर घट रहा है ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना जदी इन्फ्लेशन कमुछे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ुछे बट स्टैगफ्लेशन कौन कहूथिला इन्फ्लेशन हाई होने से अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा बट फिलिप्स का उल्टा है कि नहीं फिलिप्स कर्व बोला इन्फ्लेशन घटने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा माय मॉडरेट इट इज फॉर मॉडरेट फिलिप्स कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट इन्फ्लेशन तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स फिलिप्स कर्व जो तुमरो जो नॉर्मल डेफिनेशन अछि स्टैगफ्लेशन नो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स सिंपल फिलिप्स कर्व बिकॉज़ फिलिप्स कर्व बोला था कि व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ठीक है तो दिस इज करेक्ट In a standard expectation, Phillips curve क्या बोला? If inflation expectation rise, the short-run Phillips curve shift leftward, implying lower inflation at every level of unemployment. ठीक है? इसका क्या था? इसका आंसर yes, rightward होगा. आपको इट चेंज करो इट इज rightward. लिखो. When the Phillips point लिखो क्वेश्चन नंबर 5 रे. When the Phillips curve shift rightward, when the Phillips curve it shifts rightward it indicates lower inflation of at every level of unemployment lower inflation at every level of unemployment लोअर लेवल एक में देख के पूछिए फिलिप्स कर्व सॉरी हायर देखो हायर लेवल से व्हेन इट इज राइटवर्ड देखो इट राइट हायर इट इंप्लाइज नॉट लोअर इट इंप्लाइज हायर इन्फ्लेशन रेट एट अनएम्प्लॉयमेंट देखो जदि राइटवर्ड शिफ्ट होची ऑब्वियसली इट विल लीड टू बॉडी वन इन्फ्लेशन हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एट एनी गिवन एम्प्लॉयमेंट अरे जदि एटा राइटवर्ड हे जिवो ऊपर जदि जिवो राइटवर्ड तो हां तो ऊपर तो रहइबो तो इन्फ्लेशन बॉडी वन जदि लेफ्टवर्ड रहइबो तो इन्फ्लेशन घटिबो ना दिस इज लेफ्टवर्ड दिस इज राइटवर्ड ठीक तो इट आर भी आंसर कौन रहेगा 1 मैक्सिमम है कंजा फॉलो यस एटा भी बहुत इजी क्वेश्चन डिसइन्फ्लेशन रिफर्स टू फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग डिफ्लेशन रिफर्स टू सस्टेन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल जेमते हम पढ़ी थिलु गोटे थिला कोन डिसइन्फ्लेशन एंड सेकंड कोन थिला डिफ्लेशन
तो डिसइनफ्लेशन रो कोन होतले एटा एक्सिस थिला दिस इज टाइम पीरियड थिला एक मिनट लाइट बंद कर दी गया सर लाइट टा ऑन कर दो सेटे रिकॉर्डिंग चालू थर्ड वाला स्विच ना सर थर्ड वाला सर ना जल्ला नहीं थोड़ा बीजे को थर्ड हाँ सर हो गया हेला सर हेला हाँ ठीक है तो ये देखो डिसइनफ्लेशन एंड डिफ्लेशन देखो व्हाट इज डिसइनफ्लेशन डिफ्लेशन माने इट इज ऑपोजिट ऑफ इनफ्लेशन एटी प्राइस कमिबो एटी हमें कोन नेथलु टाइम पीरियड एटी प्राइस लेवल ठीक अछि एटी प्राइस लेवल बढ़ुछि एटी टाइम पीरियड बढ़ुछि तो डिसइनफ्लेशन कोन कहउछि it is slow or gradual fall in the rate of inflation such that it will never be zero पडुछि प्राइस गुडा रेट गुडा पडुछि but it will never become enter into negative quarter inflation rate positive रहिबो डिफ्लेशन र कोन होछि हठात किना प्राइस पड़ जाओ आर एग्जांपल मु जे देबी सपोज पोटैटो रो मे रे जदी तार प्राइस अछि 20 रुपी पर केजी ठीक अछि जून रे जदी तार प्राइस हला 18 रुपी पर केजी तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट जुलाई रो जदी प्राइस हला 15 रुपी पर केजी धीरे धीरे फॉल होछि प्राइस ताको हमें कहबा कोन डिसइनफ्लेशन बट जदी 20 रुपी पर केजी रु डायरेक्ट 2 रुपी पर केजी हे जिवो ताको हमें कोन कहबा डिफ्लेशन सस्टेन पूरा लगातार immediate fall in the price of goods and services so yes deflation refers to fall in the rate of inflation while prices are still rising no doubt and deflation refers to sustained fall in the general sustained immediate fall in the price and hyperinflation is typically characterized by very low inflation ये तो गलत हो गया hyper माने कौन very high inflation तो केमती low रहइबो करेक्ट तो आरो आंसर होइबो अगेन ए hyperinflation माने तो high inflation low it is not characterized by low inflation question number 7 well anchored inflation expectation makes inflation less sensitive again वो tomorrow real data सब थिला well anchored inflation expectation make inflation less sensitive to temporary shock allowing central bank to stabilize inflation smaller change output and employment if inflation expectation becomes unanchored देखो एटा कोन कहू छे anchored माने कोन हो छे what is mean by anchored एटा इंग्लिश क्वेश्चन अगर यूपीएससी जारो इंग्लिश टिके भलो से करि पारिब what is anchor कोठी यूज हो छे शिप रे हाँ होल्ड पूरा होल्ड करी की तो जदी इन्फ्लेशन फिक्स्ड अछि बेसी फ्लक्चुएट होनी आरबीआई को प्रॉब्लम बेसी हेबोनी पॉलिसी चेंज कर बनाएदा है ना तो हमको जाना अछि कि इन्फ्लेशन 2 वर्ष जाय सेम रहइबो तो आरबीआई कैन बेटर प्लान जदी इन्फ्लेशन बहुत फ्लक्चुएट होछि अनएंकर्ड तो आरबीआई को प्रॉब्लम हेबो जदी एवरी मंथ जदी इन्फ्लेशन चेंज हेबो RBI cannot plan. Central bank it like well anchored inflation expectation make inflation less sensitive to temporary shock, allowing central bank to stabilize inflation with smaller changes in output. जदि inflation गुडा expected inflation जदि anchored मतलब fixed जदि रहउछि it will help with better planning. Inflation expectation जदि unanchored हे जिवो जे predict करू जेता very अगर मतलब very fluctuating तो it will not help tends to say making decision costly in terms of output surprise. If inflation expectation becomes unanchored and agents expect higher future inflation, the short-term Philip curve tend to shift upward, making disinflation costlier in terms of output sacrifice. इसका सी है इसका ठीक अच्छे what it say that if inflation expectation become unanchored ठीक है and agents and they are what they are expecting कि future है तारे inflation जो दी बड़ी it is just an English question the short term Philip curve tends to shift upward एमती रहिबो तो upward कोन है making disinflation costlier in terms of output अच्छा जदी upward जाउ छी ठीक अछि सेटा इन्फ्लेशन हेबो कि डिसइन्फ्लेशन हेबो सेटा तो हाइपर इन्फ्लेशन
it will make disinflation costlier. तो disinflation जदि costlier रहबो this will fall in terms of output sacrifices. मतलब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, करेक्ट. हाँ ठीक है. डिसइंफ्लेशन माने कौन? इट विल फॉल, बट अगर ऊपर जा रहा है यस इट विल मेक डिसइंफ्लेशन कॉस्टली. ठीक है, इंग्लिश वर्ड. ठीक. तो यार आंसर कौन रहेगा? सी. चलो कैसे फॉली स्टेटमेंट अगेन अनएक्सपेक्टेड. ठीक है. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कैन एक्ट लाइक ए टैक्स ऑन होल्डर ऑफ नॉमिनल एसेट. ठीक है, देखो इसको समझो थोड़ा क्या होता है. तुम पाखर जदि कैश अच्छी 50,000 टंका, अनएक्सपेक्टेडली इन्फ्लेशन बढ़ी गला, तो से टाइम रे 3% इन्फ्लेशन चालू तुमर 50,000 तुम हाथ में कैश थी. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 10% हो गला, एबे 50,000 वैल्यू कमी जीवो कि घटी जीवो? कमी जीवो. दैट इज द व्हाट इज सेइंग. अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कैन एक्ट लाइक अ टैक्स ऑन होल्डर ऑफ नॉमिनल एसेट. जदि तुमरे कैश अछि इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ टैक्स और नॉट, तुमर वैल्यू आपे पे कमी गला. 3% जो वैल्यू थिला 50,000 रे 10% तार वैल्यू इट जस्ट एक्टिंग एज ए टैक्स. अनएक्सपेक्टेडली हाई इन्फ्लेशन बेनिफिट फिक्स रेट लेंडर. नहीं, काकू बरो करथिला लेंडर विल बी एट लॉस, इट इज बेनिफिट टू बोरोवर. बोले कि ना इन्फ्लेशन जदि बढ़िबो बोरोवर माने फायदा रहइबे, ता काहे कि से मानो को फिक्स्ड इंटरेस्ट फिक्स्ड ईएमआई पे करबार अछि, लेंडर वाला विल लॉस. तो आंसर हेबो ए. Consider following statement. A depreciation of the domestic currency. Yes, it is linked to जो तुम्हारा foreign exchange system रो. A depreciation of domestic currency, other things remaining the same, tends to increase domestic price of imported goods. Clear? जदि हमरो currency value जदि गलिबो, imported goods तो costly रहबो ना. It tends to increase domestic prices of imported goods and contribute to what? Imported inflation. जो टाइप चालू छी हमरे डॉलर जो रुपी रे वैल्यू फॉल होची, तो हमें जो गुड्स इंपोर्ट कर क्रूड ऑयल, it is costing us in terms of what? Imported inflation. In terms of imported inflation. Clear है ना? This is simple ना. जदि हमारा रुपी रो value fall है and we are importing, तो हमारा import will be definitely it will be costlier. That is what it's speaking. In an economy where food and fuel have high weightage in the CPI basket, global commodity prices shock transmitted through exchange rate improvement can significantly influence headline. This is also purely English, it is also correct. Simple English. जदि फूड एंड फ्यूएल रो जदि सीपीआई बास्केट रो वेटेज अछि, तारो जदि प्राइस रे किछि इफेक्ट हैला, ऑब्वियसली इट विल इन्फ्लुएंस व्हाट? हेडलाइन इन्फ्लेशन. काहे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को कमोडिटी थिला, हेडलाइन रे फूड एंड फ्यूएल कमोडिटी थिला. हां, कोर रे फूड एंड फ्यूएल पार्ट न थिला, तो हेडलाइन रे फूड एंड फ्यूएल जदि अछि इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इन्फ्लुएंस हेडलाइन इन्फ्लेशन. आंसर इज in developing economies like India, structural inflation structural factors such as inadequate infrastructure, supply chain bottleneck and low productivity in agriculture can contribute to persistent inflation, particularly in food price. ठीक अच्छे है ना. जदि आमर कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं, कोल्ड स्टोरेज चेन क्या होता है? जहां पे फार्मर्स लोग अपना प्रोड्यूस रखते हैं. जैसे ट्रैफिक गेट में जो सब्जी जो लेते हैं, नुआगांव से सब्जी आता है, इट कोल्ड स्टोरेज चेन फैसिलिटी नहीं, तो ऑल वेजिटेबल दीज आर पेरिसेबल आइटम, सड़ जाएगा जल्दी. तो वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा रेट में सुबह सुबह बेच के चले जाते हैं और शाम को कम रेट में बेचते हैं. डिस्ट्रेस है. तो इफ देर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट आवर फूड प्राइसेस बिकॉज इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा. ठीक है. स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन टिपिकली रिजॉल्व प्योरली बाय शॉर्ट टर्म मॉनेटरी टाइटनिंग. लॉन्ग टर्म गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एटा रोड बनैबा, ब्रिज बनैबा लॉन्ग टर्म, इट इज कैपिटल मार्केट, बहुत पैसा खर्च होची. तो स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन जदि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव टू डेवलप. इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म लागिबो एटा. दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म. अगेन इट इज आंसर ए. बुझिलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनैबा इज नॉट शॉर्ट टर्म बोरिंग मेजर, बहुत बड़ा कथा, फिस्कल मेजर नेबा पड़ियो सरकार को. क्लियर? 10 क्वेश्चन हो गया ये. ऑब्वियसली एंड दिस 10 क्वेश्चंस कमिंग तो थोड़ा इजी था. ओपीएससी लेवल का सब डायरेक्ट क्वेश्चन थिला इटा. ए फर्स्ट टेस्ट इट वाज बिट इजी. देखो मनी मार्केट एंड कैपिटल, ए सब चैप्टर समस्त थिले, सब थिले, तो आपन थिले, सब थे, सब थे तुम. हां, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट जनरली शॉर्ट टर्म
money market instrument are general money market instrument, they are generally short term debt instrument with or original maturity up to 1 year. करेक्ट, दो टाइप इंस्ट्रूमेंट था ना, हाँ करेक्ट, आमे पढ़िथिलु मनी मार्केट आ गोटे थिला कोन कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इट इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग रिक्वायरमेंट. ठीक अच्छे, मनी मार्केट जो इफ ए बोरोवर नीड्स मनी फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जब सैलरी देबार अच्छी, रेंट देबार अच्छी, तो इट विल अंडर, वो कहाँ जाएगा, कौन से मार्केट में जाएगा, ही विल गो टू मनी मार्केट. बट इफ ए बोरोवर वांट्स फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, तो ही हैज टू गो टू कैपिटल मार्केट टू बोरो. आर लिक्विडिटी कौन थिला, मनी मार्केट रो लिक्विडिटी इज हाई, आर लिक्विडिटी इज लेस. देन वी रेड अबाउट इज जो टाइम पीरियड अप टू, आरो मैच्योरिटी टाइम पीरियड केते थिला 1 ईयर, आरो मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन 1 ईयर. ठीक अछि, आरो मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन 1 ईयर. देन एग्जांपल कोन कोन थिला मनी मार्केट रो, टी बिल, सीपी, सीडी, डब्ल्यूएमए, वेज एंड मींस एडवांस, आ कोन थिला तुमरो नोटिस मनी है ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मनी मार्केट. किए रेगुलेट करथिला मनी मार्केट को, मनी मार्केट इज सोलली रेगुलेटेड बाय आरबीआई. बट कैपिटल मार्केट रो जदि एग्जांपल हमें देखियो कोन को थिला, तुमरो डिबेंचर्स, शेयर्स, bonds, derivatives, these are the instrument of capital market, and this market is solely primarily regulated by SEBI, primarily. ठीक अच्छे, but in some cases RBI also regulate, but primarily this market is regulated by SEBI, but RBI रो भी interference अच्छे. But money market रे it is solely regulated by RBI. There is no मतलब जो role of SEBI in that money market matter. ठीक है. Now coming to question, बहुत simple question. तो first one is right की wrong. देखो money market instrument are generally short term, है ना, they are generally short term debt instrument with original maturity up to 1 year. This is correct. Second, capital instrument they are primarily used to raise long term funds, often with maturity exceeding 1 year or with no fixed maturity. Correct, long term है, long term borrowing requirement and maturity exceeding 1 year. T-bill and CP, they are example of capital market? No. T-bill, treasury bills, CP, these are example of money market. So your answer will be again A, 1 and 2. Simple question. T-bill and these are the example of money market. Question number 12. T-bill, these are short-term security issued by RBI on behalf of central government and are classified as money market. Yes. डायरेक्ट डेफिनेशन. ठीक अच्छे, टी बिल के इश्यू करथिला, करूचे आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ whom, on behalf of central government, and it is offered at a discount. T bill they are issued at a discount to face value and redeemed at nominal value. किसका जो वैल्यू था, and do not carry an explicit coupon rate. What does it mean? It do not carry explicit coupon rate. इसका मतलब क्या है, there is no interest. T bill is zero coupon bond बोलते थे T bill को, zero coupon rate, sorry. तो because T bill it doesn't give you interest, 0% interest है. But फायदा क्यों, why people will invest in T bill? Because it is offered at discount, but redeemed at T. जैसे जो T bill लो जदि देखो आरो फेस वैल्यू अच्छी 100 टंका, बट सरकार आपको केते ऑफर करिवो, 10% डिस्काउंट, 90 रुपये सरकार इशू करिवो 10% डिस्काउंट देकी. एंड जेबे मैच्योरिटी हेबो लोक को केते मिलिवो, 100 टंका. बुझिल. तो टी बिल रो फेस वैल्यू अच्छी 100 रुपी, गवर्नमेंट विल इशू इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट, फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट, तो गवर्नमेंट विल इशू करिवो 90 रुपी रे, लोक माने 90 रुपी देबे, बट जेबे मैच्योरिटी हेबो केते लोक को मिलिवो 100 रुपी. तीनटा टी बिल थिला, 91 डे टी बिल, 182 डे टी बिल एंड 364 डे टी बिल. ठीक है, पढ़िबो. टी बिल दे आर इशूड, यस, एंड मन रखिबो टी बिल दे डू नॉट गिव यू interest, it is offered at discount. This is very important point. Both the central government, state government regularly issue T-bill. No, T-bill is only issued by central government. This is also point. T-bill खाली central government issue करी पारिबो, state government किसी role नहीं. Again answer is A. ठीक है, T-bill can be issued by central government, not
state government. CD, again this is the instrument. These are negotiable money market instrument issued by SCB and certain financial institution for raising short term funds. Correct है ना? सर्टिफिकेट इश्यू किए इश्यू करथिला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अछि शेड्यूल कमर्शियल बैंक इश्यू करूछि फॉर शॉर्ट टर्म फंड मनी मार्केट. CDs in India that typically issued at discount to face value to original. Yes, 7 days for 1 year for a bank. এটা তোমার নোটস রে আছে ঠিক আছে. It is also issued at a discount just like T-bill. Cooperative bank and regional rural bank, they are the major issuer of CD. No, এটা আমি নোট exception. Cooperative bank and RRB they cannot issue CD. से माने इश्यू करि पारिबेनी CD. अन्य बैंक गुडा करि पारिबे, ए दी बैंक करि पारिबेनी. Cooperative banks and regional rural bank they cannot issue CD. এটা করে দিলি কি হ্যাঁ question 14 commercial paper is an unsecured short term debt instrument issued by large corporates financial institution to meet working capital requirement. Yes, जितने भी मनी मार्केट रे पैसा बोरो करू सेटा कोन पाई दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल मार्केट रे फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल डिफरेंस कोन दिला. वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट सैलरी देना रेंट देना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना एंड फिक्स्ड कैपिटल माने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एक कंप्यूटर ले लिए इट विल गो फॉर 10 years at least. ठीक है, मशीनरी ले लिए इट विल रन फॉर 10 years at least. तो दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेट इन मनी मार्केट. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कोठी मेट होबो इन कैपिटल मार्केट. CP they are money market instrument and usually have an original maturity of more than 1 year. This is wrong. CP को मार्केट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट मैच्योरिटी तो लेस देन 1 year रहबो. तो 2 जदी हम एलिमिनेट कर देबा अच्छा तो 1 and 3. CP are issued at a discount and typically placed privately with investor more than 10. तो सिंपल जदी एलिमिनेट कर देबो तो आंसर भी आसी जिवो. थर्ड स्टेटमेंट पढिबार दरकार नथिला. ठीक है, तो दिस इज द आंसर विल बी C. 15 the call money market. Again the call money market for overnight is the market for overnight fund where bank borrow and lend on unsecured basis to manage very short term liquid. Yes, call money market it is a interbank bank with bank to bank transaction hotila. It is a interbank transaction. So this is correct. Repo repurchase transaction in the money market. These are collateralized borrowing arrangement typically backed by government security. जेमती मु कहूतली repo जोठी भी तमे what पाइबो it means what? It means short term and एठी तमे कोन रहइबो collateral रहइबो. Wherever you find the word repo मतलब the lending will be of short term and repo rate जे lend करूची collateral देबा पड़िबो. Repo means what? Repurchase agreement. जेमती suppose इटी RBI शेड्यूल कमर्शियल बैंक को किसी पैसा दोछि 100 crore. It will charge interest. Suppose X% charge करा. This interest is known as what? Repo rate. Repo rate माने कौन? It is the rate at which RBI lends to शेड्यूल कमर्शियल बैंक. ठीक अच्छे. आरो मनो कौन है रीपर्चेज एग्रीमेंट. मतलब देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैज टू गिव सर्टेन कोलेटरल टू RBI. किसी गिरवी रखिया पड़िबो तापर RBI पैसा देबो. एंड जेबे शेड्यूल कमर्शियल बैंक किछि गिरवी रखिबो RBI को से फर्स्ट कहइबो कि मु एबे ई कोलेटरल ता गिरवी रखुछि एट सर्टेन डेट आफ्टर 3 days आई विल टेक बैक आई विल रीपर्चेज दैट कोलेटरल एंड आई विल गिव यू मनी. मतलब बुझिलो एमती नै कि कोलेटरल रहइबो से पैसा देबो एंड रीपर्चेज करि देबो जो कोलेटरल देइथिला. बुझिलो तो एटी कोलेटरल किए देबो शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल गिव कोलेटरल RBI विल गिव मनी. जेबे ये कोलेटरल सबमिट करिबो
SCB will माने कंफर्म करिबो यस कि आई विल रीपर्चेज द कोलेटरल फ्रॉम यू एट दिस डेट बाय पेइंग मनी जति ताको रेपो रेट कहू रीपर्चेज एग्रीमेंट तो दिस इज करेक्ट इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल थोड़ी अलगा किछि देबो कोलेटरल इज नथिंग बट गवर्नमेंट रो किछि सिक्योरिटी देबा पड़िबो बिकॉज रेपो ट्रांजैक्शन आर कोलेटरलाइज्ड दे आर क्लासिफाइड एज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट रेपो माने शॉर्ट टर्म तो इट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट the answer will be 1 and 2 clear consider following statement equity share represent ownership in a company and entitle shareholders to residual profit and voting rights direct from the jo notes hai na there are two types of share equity shares and preference share equity share ja pakro roibo se voting kari paribo ja pakro preference share rebo taku sebo केवल कोन मिलिबो dividends मिलिबो ताटू profit किछि मतलब नथिबो so this is correct equity shareholder it represent ownership whereas jo preference shareholder it only gives you what dividends no voting rights debentures and corporate bond are debt instrument that provide fixed interest payment and have priority over equity in claims on asset during liquidation chalo eta dekhiba both equity shares and debentures they are typically regarded as money market eta kono thik habo थर्ड स्टेटमेंट देखो कैपिटल थर्ड को एलिमिनेट कर देलो त आंसर कोन रहबो तो एमटी बहुत सारा क्वेश्चन जदि तुमको जदि जना पड़िबोनी ट्राई टू एलिमिनेट थर्ड आसी जाओ थर्ड जदि तुम पूरा क्लियर अछि बेसिक क्लियर अछि एलिमिनेट कर दियो यू विल गेट द हां इटा जे देखिबा डिबेंचर्स एंड कॉर्पोरेट डेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोवाइड फिक्स्ड टर्म इंटरेस्ट पेमेंट यस हैविंग प्रायोरिटी ओवर इक्विटी देखो ऑब्वियसली ना इक्विटी माने तुम कोन मालिक तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा मालिक को मिलेगा कि मालिक का काम क्या होता है पहले अपने एम्प्लॉय लोग को पैसा देके सेटल करना ना कि पहले अपने ही खा लेना तुम्हें जब मालिक रहइबो तुम कौन करिबो सुनिधि फर्स्ट अपने ही ले लीजिए पैसा व्हेनेवर यू आर मालिक तो यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द एम्प्लॉय तो सेम कहू छी क्योंकि डेट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड माने कोन तुम कंपनी रे जे इन्वेस्ट करछो फर्स्ट तुमको रिस्पांसिबिलिटी तार टेक केयर करबा अछि फिर लास्ट जोटा बचिला इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलिबो so that is what it is saying debentures and corporate bonds are debt instrument that provide fixed term interest payment to its investor and they have priority over what they have priority over equity तुम जा मो पाखरे जदी काय कंपनी रो डिबेंचर अछि तुम पाखरे जदी कंपनी रो इक्विटी अछि तुमको लास्ट सीधा पेमेंट हो फर्स्ट मोते पेमेंट हो बिकॉज़ दीस आर फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड मोर रिस्की ठीक है चलो क्वेश्चन 17 द प्राइमरी कैपिटल मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटी आर इशूड यस तो हमें टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ी थिलो कौन कौन थिला वन इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट अनदर वन इज सेकेंडरी कैपिटल मार्केट प्राइमरी कैपिटल मार्केट रे कोनो फ्रेश इशू ऑफ शेयर हेउतिला फ्रेश पूरा बिगनिंग जो इशू होची शेयर ऑफ फ्रेश इशू एंड एटी खाली कोनो ओनली यू कैन बाय यू कैन नॉट सेल एटी कोनो सेकेंडरी मार्केट रे एग्जिस्टिंग जोटा अछि शेयर्स कि इंस्ट्रूमेंट ताको हमें ट्रेड करिबा एंड इन दिस केस यू कैन बाय एज वेल एज सेल द प्राइमरी कैपिटल मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटी आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनीज टू रेज fresh capital first time issue initial public offering the secondary market provides liquidity by enabling investors to buy and sell existing security this is also correct initial public offer of equity shares are example of secondary market now initial public offering is the example of primary market that will be answer 1 and 2 consider following step mutual fund pool money from many investors and invest in diversified portfolio of securities such as equity shares bond money market instrument म्यूचुअल फंड माने कोन थिला हम पैसा एकत्रित करबा तापर दे देबा बैंक को से मैनेज करबो से जहां जोटी इन्वेस्टमेंट करू हमको कोन दरकार हमको निजर इंटरेस्ट दरकार दिस करेक्ट ETF they are mutual fund scheme whose units are traded on stock exchange like individual shares correct भारत ETF 22 एक 22 शेयर्स कि 22 कंपनी रो शेयर स्टॉक सब गोटे एक संगे ट्रेड करि परिबा both mutual fund and ETF they are regulated primarily by Reserve Bank of India SEBI एटा ही कैच अछि SEBI जो because this mutual fund is also a capital market instrument they are regulated primarily by SEBI and not RBI तो आरो आंसर होइबा 1 Consider following statement. Long-term government of India bond with maturity greater than 1 year are classified as capital market instrument. Correct. Yes.
लॉन्ग टर्म ऑफ इंडिया बॉन्ड जल्दी जार मैच्योरिटी जदि जार भी मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर तो ताको हम कौन कहबे इट इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिटेल इन्वेस्टर कैन एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू मेकानिज्म लाइक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बताया था आरबीआई रो गुटा न्यू स्कीम जोटी आमे स्मॉल इन्वेस्टर जार पकड़ 1000 टंका अछि 2000 टंका अछि से माने भी शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करि पारिबा दिस इज द स्कीम ऑफ आरबीआई दैट इज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम थ्रू व्हिच स्मॉल इन्वेस्टर कैन आल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6000 टंका तो पाकर अछि यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट all GSEC including long term bonds are universally classified as money market again जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड होची सेटा तमरो कैपिटल मार्केट इसलिए सबका ए आ रहा है ना इट इज आल्सो ए consider following money market instrument typically have lower risk and low expected return compared to capital market instruments such as equity ठीक ना money market is typically have lower risk मनी मार्केट रिस्क कम अच्छी ना लिक्विडिटी बेसिस रिस्क कम अच्छी जोटी रिस्क कम रहिबो सिटी रिटर्न बेसी मिलिबो रेसेटी जोटी रिस्क कम सिटी रिटर्न भी कम हायर रिस्क हायर रिटर्न इकोनॉमी रे लोअर रिस्क लो रिटर्न कंपेयर टू कैपिटल दिस इज करेक्ट द मेन पर्पस ऑफ मनी मार्केट इज टू मीट शॉर्ट टर्म फंडिंग एंड लिक्विडिटी नीड्स व्हेरेas द कैपिटल मार्केट प्राइमरी फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिस इज करेक्ट मनी मार्केट ट्रांजैक्शन दे आर ऑलवेज कंडक्टेड ओनली इन फॉर्मल स्टेटमेंट always the 80 what कोन होची only or always so first time mutual formal stock exchange होनी सेटा over the trade counter रे बेसी होची इट इज अगेन ए मनी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज रे नहीं कैपिटल मार्केट रो इंस्ट्रूमेंट गुडा स्टॉक एक्सचेंज रे ट्रेड होची मनी मार्केट रो इंस्ट्रूमेंट द स्टॉक एक्सचेंज रे ट्रेड होनी तापर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेक्ट ठीक है BOP records only trade in goods and exclude services. Balance of payment माने हम कौन बुझी लो पूरा वर्ष सारा जितने भी गोटे रेसिडेंट एक्सपोर्ट करूची और इंपोर्ट करूची पूरा 1 ईयर पाई ताकू जदि हम रिकॉर्ड करिबु गोटे सीट रे ताकू हम कौन कहबो बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज एनुअल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हम एटी सर्विसेज थोड़ी एक्सक्लूड करूछु सर्विसेज भी इंक्लूड होची BOP रे so this is not correct the BOP is always in deficit because the country typically imports more than it exports so the BOP always in deficit अछि एरा देखा थर्ड स्टूडेंट देखो the BOP as per modern standard is structured into current account the capital account the financial account error omission exchanges in foreign exchange this is correct देखो द BOP इज ऑलवेज इन डेफिसिट थोड़ी था हमरो कोनो इंडिया रो BOP डेफिसिट ऑलवेज होची कि नहीं तो ऑलवेज नॉट डेफिसिट तो दिस इज करेक्ट द BOP इंक्लूड्स ओनली गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एंड एक्सक्लूड प्राइवेट सेक्टर किए भी रेसिडेंट एनी रेसिडेंट जे ट्रांजैक्शन करूची एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूची तारो BOP रे रिकॉर्ड रहइबो खाली गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन नहीं सबुरो एनी रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जारो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को तार रिकॉर्ड रहइबो तो मोस्ट करेक्ट आंसर विल बी सी BOP कंपोनेंट थिला ना हम BOP पढ़थिलु कंपोनेंट कोन थिला BOP रे चारिटा थिला ना one is current account capital account and net emission and errors और last में कौन थिला forex reserve there is 4 component current account capital account net emission errors and forex reserve तो आर आंसर कौन रहिबो आंसर इज सी which one of the following correctly describes the current account of the BOP first it records only export and import of goods and exclude services नहीं current account रे में कौन कौन मेजर करथिलु current if you read about current account दीटा थिला balance of trade and balance of invisible ठीक अछि balance of services balance of trade रे what we are seeing only goods balance of invisible रे only services ठीक अछि माने एटी कोन तो value of export of goods minus import of goods this is balance of trade 80 export minus import of what services तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है जेबो सेकंड स्टेटमेंट कौन होची it records all international purchases and sale of financial assets such as equity bonds and loan ठीक है ये भी सही लग रहा है it records export and import of goods and services primary income factor and secondary income current transfer between residents and this is C correct answer
इट रिकॉर्ड्स ओनली यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं, ओनली तो नहीं है ना, ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफर एटा हमें पढ़थिलु कोन थिला एटा ट्रांसफर पेमेंट कोठी अछि बैलेंस ऑफ इनविजिबल थिला देखिबो ट्रांसफर पेमेंट गिफ्ट्स रेमिटेंसेस डोनेशन ये सब तुम्हारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल में था। तार बेस्ट आंसर होबो इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड सेकेंडरी इनकम ऑफ रेसिडेंसेस रेमिटेंस सेटा आंसर विल बी सी। it can be also correct but it is over खाली एटा record करनी आउ भी एटा 8 B and C रो सब तो best answer you have to choose one ना, तो C will be the most appropriate answer। एमटी भी था दीटा ठीक रहिबो but you have to choose most appropriate answer, वो इंस्ट्रक्शन रहेगा ओपीएससी यूपीएससी में भी। which one of the following statements correct regarding capital and financial account, अच्छा capital and financial account ये लिख लो, ये शायद नोट्स में नहीं था, तो दिस आंसर इज ये वाला बी, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन यू कैन राइट इन द आईएमएफ फ्रेमवर्क कैपिटल अकाउंट रे कौन था कि इट कवर्स कैपिटल, जैसे तो कौन था लोन ये सब था इन नॉन प्रोड्यूस कैपिटल अकाउंट में कर अरे बी रहे 23 हां, तो कैपिटल अकाउंट जेमति लोन थिला बैंकिंग ट्रांजैक्शन थिला it covers capital transfer transaction in non-produced non-financial asset, example while the financial account covers cross-border transaction in financial assets and liability like FDI loans etc। और definition इटा मन रखिबो, ठीक अछि माने जो कैपिटल अकाउंट रो मेनली भी ट्रांजैक्शन को टाइप ट्रांजैक्शन नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शन, ठीक अछि। एंड फाइनेंशियल अकाउंट रे कोन देखुछु फाइनेंशियल अकाउंट रे FDI आसीबो लोन्स गुडा आसीबो एक्सेट्रा सेटअप। कैपिटल अकाउंट जो देखिबो नोट्स से कैपिटल अकाउंट चारटा किते तीनटा कंपोनेंट थिला ना, कौन थिला लोन्स थिला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थिला फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नोट्स देखिबो। कैपिटल करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्या था फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई पढ़िथिलु लोन्स पढ़िथिलु एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पढ़िथिलु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑन करंट अकाउंट द आइडेंटिकल कांसेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स गुड्स सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर, करंट अकाउंट इंक्लूड्स ओनली गुड्स, ये तो गलत हो गया, करंट अकाउंट तो तुम्हारा सर्विसेज भी लेता है, दिस इज रॉन्ग। Balance on current account includes balance of trade in goods, net services, net income, net current transfer, whereas balance of trade refers only to export and import of goods. This is correct. Balance of trade कौन थिला हमर export and export of what? Export and import of goods. Balance of trade रे हमें खाली merchandise और goods देखुथिलु and balance of invisible कौन थिला services and overall current account ये सब include करू छी ना balance of trade and net services, तो answer will be C। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इट एक्सक्लूड एनी मर्चेंडाइज नहीं, तो इंक्लूड करछे मर्चेंडाइज माने गुड्स, तो आंसर विल बी सी, सी विल बी द आंसर, ठीक है। हां एटा मु पढेनी थिली एकोमोडेटिव स्टैंस, एटा को पार्ट थिला नेट एमिशन एंड एरर से एटा पार्ट अछि, आरो भी डेफिनेशन डायरेक्ट लिखि पारे। व्हिच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस फ्रॉम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक अछि, आरो एटा डेफिनेशन से लिख दियो। एटा कारो पार्ट थिला जो नेट एमिशन एंड एरर, ठीक अछि, नेट ओमिशन एंड एरर जो थर्ड कंपोनेंट थिला बैलेंस ऑफ पेमेंट रे सेठी, तो आरो डेफिनेशन एटी लिखो, दिस इज द बी। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कोन पय हम करू छु, इट ऑकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द बीओपी एंड आर अंडरटेकन फॉर नॉर्मल इकोनॉमिक मोटिव। हां ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दे ऑकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द बीओपी सिचुएशन एंड आर अंडरटेकन for normal economic motives, whereas accommodative transaction केबे होछि, these are undertaken specifically to finance BOP imbalance। accommodate मतलब क्या करना है, accommodate करना, adjust करना, तो accommodative transaction it happens to finance BOP imbalances। केमति हमें BOP imbalance को balance करिबा by using what reserve official borrowing, सेटा हम यूज करता, इटा खाली डेफिनेशन मन रखिबा, आटो बेसी किछि पचारिबोनी। And this autonomous and accommodative, these are part of
net omission and error component. चार्टा component थिला current account, capital account, net omission and error, and forex reserve. Autonomous and accommodative, these are part of net omission and error. Autonomous, this transaction happen independently of BOP for economic motive, normal economic motive, whereas accommodative, it is to balance the BOP crisis or to balance the BOP imbalance using reserve or official borrowing. This definition you can note down. This answer will be. Which one the following statement is correct? A BOP deficit on the overall account implies that autonomous receipt exceeds autonomous payment. Official changes in foreign exchange are typically treated as autonomous transaction of BOP. In the theory, BOP always balances by construction with any surplus or deficit in the sum of current capital financial account being offset by changes in reserve and error. The BOP can remain permanently out of balance because reserve movement are not part of BOP. अच्छा এটা ঠিক है question. देखो this cannot be right. किछि किछि word टा मु कहथिली extreme word you directly cancel. Permanently, automatically तुमको नहीं भी आ रहा but you can solve this question. Exponentially, these are some extreme words which is 90% cases में सेटा wrong है. So BOP cannot remain permanently out of balance. It is possible नहीं, cannot remain permanently. In theory देखो the BOP always balances by construction with any surplus or deficit on the sum of current capital and financial account being offset by, तो always balance रहो चाहिए सेटा. हाँ? तो in theory yes करेक्ट तो लिख रहा है. देखो ये रखा in theory the BOP it always balances itself. Theoretically balance of payment these are balance मतलब जोटे export करू छे हमें सेति के हमें import भी करू छु. In theoretically this is correct statement. ठीक है तो सी एटा के मन रखियो पॉइंट टा. In theory yes balance of payment they always balances. जेते export करू छे हमें सेति के import करिबा कथा. In theoretical practically सेटा not possible. ठीक है. The most apt answer will be C. It is a question. Which on the following statement of current account deficit correct? Current account deficit केबे होची हमरो? When we are facing current account deficit, when we import जदि हमें बेसी करिबा, export जदि हमें कम करिबा, we will face current account deficit. A CAD means that the country's total export of goods and services exceeds its total import. उल्टा. एठी कोन कहूची? Export exceed हेबोनी, export ता कम हेबो. This is wrong. A CAD must always be interpreted as sign of economic crisis. कोन CAD हेले कोन economic crisis होइबो? ना, इंडिया तो केबे टू CAD रहउची, current account deficit is not a sign of economic crisis. A CAD implies that economy is a net borrower from the rest of the world. We are net borrower, we are net importer from the rest of the world. A CAD has no relation to saving investment gap. केमती relation रहइबोनी? किछि तो relation रहइबो. So the answer will be C. We are net borrower from the rest of the world. Which one the following statement regarding a capital financial account जो हमें पढ़थिलो है ना capital account रे कौन कौन रहइबो ना इटा a surplus on capital and financial account it indicates net foreign investor they are increasing their claims on domestic asset by home country is reducing its claims on foreign asset. ठीक আছে जदि हमरो कैपिटल अकाउंट की फाइनेंशियल कैपिटल अकाउंट गोटे पार्ट थी ना लोन एंड एफडीआई जदि एटा बढ़िबो तो के क्लेम को इट इंडिकेट्स द नेट फॉर इन्वेस्टर दे आर क्लेमिंग ऑन आवर रिसोर्सेस. कैपिटल अकाउंट माने क्या एफडीआई था ना एफडीआई माने फॉरेन जब बेसी जदि इन्वेस्टमेंट हो सरप्लस रहिबो माने द फॉरेन इन्वेस्टर दे आर क्लेमिंग ऑन आवर डोमेस्टिक एसेट्स. सो दिस विल बी करेक्ट. A surplus on capital account indicates that yes on net foreign investor they are increasing their claims on domestic assets. FDI होगा तो obviously they will claim our asset because they are heavily investing. So this will be correct answer B. 29. Which one the following statement about convertibility शायद नहीं पढ़ाया था मैं. लिखो heading दो convertibility. सही टाइम तो skip हो जाएगा. जो सेटा में बुक नथिला. ये कंटिन्यू करोगे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का convertibility. बैठे
कौन बीएड के सब लोग चले गए। हाँ यही शायद सुदर्शन सर ना दिसंबर उन लोग 5 बजे तक रहते हैं। हाँ दिन में 10 बजे से आते हैं, 10 से 5 अगर आएंगे मिल जाएंगे। सर रहते हैं कभी कभी बट अभी शायद चले गए, नहीं तो सर नायक सर, हाँ नायक सर 9 बजे तक भी रहता है बट अभी नहीं है इसलिए नहीं। ठीक थैंक देखो व्हाट इज कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी इट मीन्स दैट it means conversion of देखो कन्वर्टिबिलिटी लिखो, कन्वर्टिबिलिटी इज द ईज, convertibility is the convertibility is the ease with which a country's currency, convertibility is the ease with which a country's currency can be exchanged, can be a country's currency can be exchanged for other currency at market determined rates, can be exchanged for other currency at market determined rates. Convertibility माने कौन? How freely one currency can be converted into other currency. That is convertibility. How freely one currency can be converted into other currency. लिखो for but in India लिखो in India current account convertibility in India for current account in India for current account we follow fully convertible principle. In India for current account we follow fully convertible principle. That means for current account the currency is fully convertible, but for capital account we follow partial convertibility. But for capital account we follow partial convertibility. But for capital account we follow partial convertibility. माने कौन देखो करंट अकाउंट रे हमें कौन ट्रेड करथुलु, करंट अकाउंट में भी ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज हमें ट्रेड करथुलु ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करथुलु। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रे रुपीस फुल्ली कन्वर्टेड टू एनी अदर करेंसी, फुल्ली कन्वर्ट हो जिवो 100 टंका से डॉलर इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जिवो फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रे वी हैव पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रे कौन मोस्ट इंपोर्टेंट थिला एफडीआई एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। जदि एफडीआई रे जदि फुल अगर पूरा अलाउ कर देगा, एफडीआई सब सेक्टर फुल्ली अलाउड होची कि को सेक्टर नथिला, एटॉमिक एनर्जी नथिला, लॉटरी नथिला, दैट इज व्हाई। हां एंड लोन भी ये स्टेट गवर्नमेंट की से को भी कंट्री लोन नहीं पारिबनी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पचारे पड़िबो। तो कैपिटल अकाउंट रे द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीस पार्शियल, ठीक है। वी आर नॉट अलाउइंग एनी कंट्री टू फुल्ली इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। एमटी है तो फिर कोलोनियलिज्म आसी जीवो, सबको फ्री कर, चाइना ही सबसे पहले आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इतना इन्वेस्ट कर देगा कि और डेट हम चुका नहीं पाएंगे। बट फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड आवर करेंसी इज फुल्ली कन्वर्टिबल हो जाएगा। बट
Partial convertibility, what it means? There is certain regulation, there is certain restriction in capital account convertibility case. Clear? Capital account re amaro jo rupee ochi seta partially convertible. Current account transaction rupee ta fully convertible. This is you have to remember this point. And convertibility kette ease re gote currency olga currency को exchange ହେଇ ପାରିବ. देखो एटा देखो ଏବେ the rupee is fully convertible on both current and capital account transaction. No, the rupee is fully convertible for only current account transaction, not for capital account. The rupee is not convertible on either current account and capital account. No. The rupee is fully convertible on the current account but subject to control and restriction on the capital account. This is correct. Rupee amaro current account transaction by fully convertible but capital account by kichi restriction and regulation achi. So this is correct. The last question, which on the following statement regarding remittance sent by the NRI? Remittance current account आसुथिला कि capital account आसुथिला? Remittances को पार्ट थिला current account capital account? Current account. Transfer payment remittance, transfer payment remittance था one side है ना remittance. बाहरी जो कमोशन की जल्दी घरे पैसा पटे one side. NRI पर देखो, they are recorded under capital account. They are recorded under current account as a part of secondary income and are credit item for India. They are recorded only in errors and omission. Error and omission recorded. They are. So last और रुक गया. ठीक है. तो answer will be. ठीक है. Current account जो remittances, these are a part of current account. Transfer payment risk. मेन्स क्वेश्चन लिखिछन्ते बहुत भलो बट बहुत किछि आपन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट और डेफिनेशन सब भूल अछि. करंट अकाउंट तो सेटा थिला बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ इनविजिबल हम अलगा लिखि दिछन्ते. कैपिटल अकाउंट रे से सब लोन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सब लिखिबार थिला है ना. डिफाइन इन्फ्लेशन फर्स्ट वन इजी देखो. डिफाइन इन्फ्लेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. सिंपल थिला. इन्फ्लेशन डिफाइन करिबो डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश रो एग्जांपल देकी लिखिबार थिला जेटा बुझे देछि मु. Then second वाला पचारछि what are the structural and cyclical factor driving food inflation in India. मॉनसून ऊपर लिखि पारेबो इंपोर्ट मेजर्स ऊपर लिखि पारे बहुत किछि एरा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देबे बट लिखि छ तुम बहुत जनो. रोल ऑफ मनी मार्केट कैपिटल मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट देके दी बुझाई दे था. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज बीओपी डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट. सेटा सिंपल क्वेश्चन थिला. सिर्फ एठी जो एनालिटिकल क्वेश्चन तो हमर क्वेश्चन नंबर 2 वाज एनालिटिकल. तुमको लिखिया पड़ो कि हाउ व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिस्कस व्हाई दिस पॉलिसी इज इनसफिशिएंट टू डील विथ सप्लाई चेन इन्फ्लेशन. देखो मॉनसून तो हमर हाथ नहीं ना सेटा तो आरबीआई भी किसी करि पारिबो. फूड इन्फ्लेशन एटा पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन ऊपर कथा होछि. मॉनसून हमर हाथ नहीं. जदि खराब मॉनसून हैला से टाइम रे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमर नहीं कोल्ड स्टोरेज चेन फैसिलिटी नहीं सेति पई फूड इन्फ्लेशन ता रहिबो. हां सेति सप्लाई चेन तुम वॉर भी होची वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एलपीजी जदि प्राइस बढ़ुची इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन. 3-4टा पॉइंट लिखिबार सब आंसर. सेकंड क्वेश्चन एनालिटिकल थिका बाकी सब डायरेक्ट तुम लिखिबो. ठीक अछि. एंड अगेन मु कहउची जार हैंड राइटिंग बेटर फॉर ओपीएससी मेंस रे से पाइबो. आरो देखो कॉपी ता टिके दिव्य टिके सजेशन से लिखिची तो जार हैंड राइटिंग टिके बेटर पॉइंट्स अच्छी समस्तंकर बट हैंड राइटिंग पर टिके फोकस करिवो समस्त. विजय तुम थोड़ा तो ज्यादा करना तुम्हारा थोड़ा बच्चा है हैंड राइटिंग. ठीक है बड़ा लिखे हो ठीक है बट थोड़ा फोकस करना अच्छा हैंड राइटिंग. ठीक है हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन बट थोड़ा हैंड राइटिंग में फोकस करो. सुनी तो मैं नेक्स्ट के आसु टेस्ट देबो. मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो जाई छी स्टार्टिंग रो सेटा क्लास करि पारिबो आसु जो टाइम इवनिंग रहइबो से टाइम रे मॉर्निंग रे आसु बंद कर देता.